Mrigya's food story. Today I am back with a special recipe which is specially for my brother as it's Raksha Bandhan time. So let me show you what we need for that. And it's monsoon time. So I am making something which is easily available in month, which is makka, or you can say bhutta. I am taking the makka which is super soft. It should be milky. You can touch it and you can feel it that if it's milky or not. So let's get started with our recipe now. जो आज हम रेसिपी बना रहे हैं मक्के का हलवा, उसके लिए हमने ये 4 इंग्रेडिएंट्स लिए हैं जो है घी, कद्दूकस किया हुआ भुट्टा, चीनी और कुछ कट ड्राई फ्रूट्स। कद्दूकस हमको इतना करना है कि बिल्कुल बारीक हो जाए। सबसे पहले हम लेंगे कढ़ाई में आधी कटोरी घी। जैसे कि हमारा घी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे कद्दूकस किया हुआ भुट्टा। अब हमें इस मटेरियल को अच्छे से भूनना है। इस प्रोसेस कम से कम आधा घंटा लगेगा। थोड़ी टाइम टेकिंग है गाइस, बट आई एम श्योर यू गोना लव द रिजल्ट ऑफ इट। As you can see, but the consistency is fine as of now. So I will be adding some sugar to it. Almost 6 tablespoons of sugar. चीनी आपकी मर्जी है, आप जितना मीठा चाहते हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं। मेरे भाई को मीठा थोड़ा ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ा इसको मीठा बनाया है। Keep mixing it properly so that you break the lumps. Smells really nice. हमारे हलवे की अभी तक कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है। So guys, actually जब ठंडा हो जाएगा ना तो थोड़ा सा ये थिक हो जाता है। सो आई एम कीपिंग दिस लिटिल बिट थिन एंड इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, ज़्यादा इसको थिक नहीं करना है। दिस इज़ ऑल डन। सो नाउ आई विल बी एडिंग फ्यू कट ड्राई फ्रूट्स इनटू दिस। एज यू कैन सी इट्स लिटिल बिट सिमिलर टू मूंग दाल का हलवा। And now the real game, the taste test. Who's gonna do it, guys? My brother. Let me show you that. Wait and watch. So our halwa is done and the real taste test is going to take place. So guys, if you like my recipe, please do share, like and subscribe it. Happy Raksha Bandhan! So guys, if you like this recipe, please do share, like and subscribe the YouTube channel. Also don't forget to press the bell icon to get notified.